Hello students, how are you all? I hope you're all doing good. So we are back on your favorite learning platform, Learn Forward, and this is Malika and we are going to study from Feather Cap, People and Places, class 3. Now we are on the last chapter, that is your chapter number 18, Development of Men's Life. So, how man developed as we are living today. So, as I have already told you that it took around 1000 years to come to this stage. अब तक जो हम लाइफ जी रहे हैं, जो आज के टाइम पे हम लाइफ जी रहे हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन. सो जो ये हमें चेंजेस आए हैं हम लाइफ में, अर्ली मैन की लाइफ में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई है. सो दे डेवलप फॉर अ रीजन और उसके जो पीछे है बहुत सारी स्टोरीज हैं. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टेमिंग ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड, how a man discovered wheel, how a man discovered a wheeled cart, sledge, or a lot of things. So, in this chapter, we are going to some things which were very critical or important for our life today. आज के टाइम पे जो हमारे लिए चीज़ें ज़रूरी हैं वो उस टाइम पे कैसे डेवलप हुई और आज के टाइम पे आते आते वो इतनी मॉडर्नाइज कैसे हो गई. So, we are going to start the chapter now. I hope you are all ready with your books and pencils. Now, invention of fire was a big event in the life of an early man. Thereafter, he made many other efforts to become a modern man. जब फायर इन्वेंट हुई तो वो इन्वेंशन जो था एक बहुत बड़ा बेसिकली गिफ्ट था ह्यूमंस के लिए. बहुत बड़ा इन्वेंशन था, एक बड़ा इवेंट था अर्ली मैन के लिए, क्योंकि वहां से जो चीजें थी वो चेंज होना स्टार्ट हो गई. अब अर्ली मैन चाहता था कि वो और मॉडर्नाइज बने, एक मॉडर्न मैन बने. सो उसने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए. Early man used to eat fruit and grains. So we have learned that he used to eat food, grains and roots also, and sometimes the raw flesh. He used to throw away the seeds after eating. So when a man ate fruit or a grain, so what did he do? जो seeds होते थे, he used to throw them like this only. Some grains would have fallen on the soft ground. So there were some grains which might have fallen on the soft ground, and he noticed that plants grew from the seeds and grains. And what did he notice कि जो seeds फेंके थे उनसे नए plants जो हैं वो उग रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं from those seeds and grains. Now the early man started throwing seeds. अब उसको कंफर्म करने के लिए या और उगाने के लिए what did he do? He started throwing more seeds. Gradually he dug the earth with some tools, sowed the seeds and covered them with the soil. और उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे अब स्टोन टूल्स तो बनते ही थे. He started digging the ground and then put the seeds into it and then cover it with the soil. He then began to use wooden plows instead of stone tools. So धीरे धीरे wooden plow use करना start किया instead of the stone tools. Now what did second thing happened after the invention of fire? That was the taming of animals. Tame करना मतलब उन्हें पालना, उन्हें प्यार करना और उनसे जो वो चीजें देते हैं वो यूज करना. What was that? Early man found some animals friendly. So जो अर्ली मैन था उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो बहुत फ्रेंडली है. So dog was the first animal who became the friend as he ate the leftovers of the early man. So how a man discovered that a dog is a friendly animal? He discovered when the dog ate the leftover food which the early man left. The dog helped man in hunting. It watched day and night to protect man from wild animals. So what did dog do? Dog also helped in the hunting, and he also protect the man from the wild animals. He always used to bark when there was a wild animal around. आज के टाइम पे भी लोग dog क्यों रखते हैं? Mostly they domesticate the dogs because of the one major reason is that to protect themselves, right? अपने आप को बचाने के लिए, protect करने के लिए, security के लिए. There are certain breeds of dogs which are particularly bred for the purpose of security only. So इसी वजह से अब अर्ली मैन ने डिस्कवर किया कि जो डॉग है दैट इज अ फ्रेंडली एनिमल एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द पर्सन. Now the early man found that milk of cows, buffaloes, sheep and goats was a tasty food. और धीरे धीरे ये भी डिस्कवर किया कि जो काउ, गोट, शीप का मिल्क है, काउ, बफलो, शीप और का मिल्क है, that is very tasty. Now he started drinking their milk and instead of killing them for flesh. पहले क्या करते थे, मार के खाते थे, बट जब ये डिस्कवर किया कि उनका मिल्क एक टेस्टी फूड है, so he started domesticated them, taming them. He domesticated these animals. Gradually he started using bullock, buffalo and donkey for carrying his load. So धीरे धीरे उन्होंने क्या करा,
एनिमल स्टार्ट कर दिए लोड कैरी करने के लिए, दैट वाज योर डाउंकी, बफेलो एंड बुलॉक। हॉर्स वाज यूज्ड फॉर राइडिंग एज इट कुड रन फास्ट, और हॉर्स को यूज किया गया टू राइड ऑन इट, सो एज वी नो दैट ही हॉर्स रन्स फास्ट। नाउ सेटल लाइफ, द डेली सर्च ऑफ मैन for food ended because of farming and milk of domestic animals. So जो एक आदमी की खाने की सर्च था बेसिकली, वो कब खत्म हुआ, जब उसे समझ आ गया फार्मिंग कैसे होती है, और दूसरी चीज की जो मिल्क है वो डोमेस्टिक एनिमल से ही उन्हें मिल जाता है। He had to live near his crops and domestic animals. So अब उन्हें अपनी crops के पास और domestic animals के पास ही रहना पड़ता था। He began to live at one place in groups. अब धीरे धीरे करके लोगों को चीजें समझ आने लगी, they start living in groups. He learned to work together. The early men learned how to work together in group. They work together while sowing, watering and harvesting. So जो उनके बेसिक काम थे उस टाइम पे, सो करना, हार्वेस्ट करना, ये वाटर करना, तो इन सब में वो एंजॉय करते थे, ये सब चीजें मिलके करते थे। Thus they enjoyed their work, और इस तरीके से उन्होंने अपना काम जो है बहुत अच्छे से एंजॉय किया। Now the early man started making huts with wood and stones. तो अब धीरे धीरे घर बनाना शुरू किया, अपनी हट्स बनानी शुरू करी वुड और स्टोन से। He covered them with leaves and branches of trees. तो किससे कवर करते थे, लीव से और ट्रीज की ब्रांचेस से। उन्होंने बड़े बड़े स्टोन जो थे रूफ्स के ऊपर रखने शुरू किए, सो दैट यहाँ पे रूफ्स पे शुरू करे बड़े पत्थर रखने, ताकि जो लीव्स है वो नीचे ना आए, टू स्टॉप देम फ्रॉम फ्लाइंग अवे। A number of huts made nearby formed a habitation. So जब नंबर ऑफ हट्स, अब बहुत सारी हट्स पास पास बन गई, एक हैबिटेशन फॉर्म हो गया, बेसिकली एक छोटी सी कॉलोनी फॉर्म हो गई जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। These habitations were mostly near a river to get water for drinking and irrigation. So जो ये habitations थे बेसिकली ये जो थे रिवर्स के पास होते थे, so that they can get water for drinking and as well as irrigation. Now people had some free time. They ate food together, they sang and danced together. And now आज के टाइम पे जैसे everyone is very busy, पहले ऐसा नहीं होता था। The people got free time. They now what did they do? They ate food together, they sang together, danced together, and some of them people spend their free time by painting on the walls of caves with pictures of animals and hunting scenes. So to pass their free time उन्होंने क्या करना शुरू किया? They started painting on the wall of the caves which showed the pictures of the animals and the hunting scenes. Now travel. Let's check this. Bhimbetka is a place near Bhopal in Madhya Pradesh. It has many caves. It has many caves which have paintings done by early humans. So मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, वहाँ पे बहुत सारी गुफाएं बनी हुई हैं जहाँ पे अर्ली मैन की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी. So if you cannot go there, you can even check on the internet. You can have a look that how the paintings of the early men used to look like. Now travel. Some people of the habitation moved to a new source of water and fertile land. अब धीरे धीरे जो था उन्होंने क्या करा, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, एक हैबिटेशन से दूसरी हैबिटेशन की तरफ जाना. A new habitation was formed. अब जैसे जैसे कहीं पर्टिकुलर जगह से निकलते थे दूसरी हैबिटेशन में जाके रहने लगे, एक नई हैबिटेशन वहां पे फॉर्म हो गई. People visited each other habitations. So एक दूसरे के पास भी जाया करते थे, नई नई हैबिटेशंस फॉर्म होने लग गई थी ऐसे. अब while moving to form a new habitation or to meet his friends, the early man carried his things on the back. Later he tamed animals for carrying his load. So जब एक जगह से ये दूसरी जगह मूव करते थे तो what did they used to do? They used to load the things on their back. मतलब अपनी कमर के ऊपर सामान जो था ऐसे या फिर सर पे रख के लेके जाते थे. उन्होंने धीरे धीरे एनिमल्स को टेम करना स्टार्ट किया टू कैरी द लोड्स. नाउ ट्रैवल बाय रिवर. ये तो था ट्रैवल ऑन फुट. नाउ बाय रिवर. द मैन सॉ लॉग्स ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन द रिवर. अब एक आदमी ने देखा कि जो लॉग्स है, द वुड पीसेस, दे आर फ्लोटिंग ऑन द रिवर. He himself floated holding these logs many times. So उन्होंने क्या करा कि इन logs को पकड़ के उसके साथ float करने की कोशिश करी. He found that the hollow trunks of the trees float above water. What did he discover? कि जो खाली hollow trunks होते हैं, अंदर से खाली trunks होते हैं, they are help to float on water. So अगर आप देखोगे, आप पानी की खाली बॉटल डाल दोगे पानी में, basically if you put the empty bottle of the water in the bucket which is full of water, the bottle will float. वो डूबेगी नहीं क्योंकि वो बहुत लाइट वेट है. और इसी तरीके से जैसे जो ट्रंक्स होते थे जो लाइट मतलब बीच में से हॉल होते थे, खाली होते थे, उनके ऊपर ये फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया था.
अब उन्होंने क्या करा जब उन्होंने ये चीज डिस्कवर करी, ही कट डाउन अ ट्री एंड मेड इट्स ट्रंक हॉलो। पहले ट्री का ट्रंक काटा, फिर उसे हॉलो किया। दिस वाज द फर्स्ट बोट मेड बाय मैन फॉर ट्रैवलिंग ऑन वाटर। और इस तरीके से इंसान ने फर्स्ट बोट बनाई। ही मेड अ फर्स्ट बोट टू ट्रैवल ऑन वाटर। Later, he learned to tie a number of logs together and make a raft. And this is how early man made a raft. He tied several logs together and traveled on it. So this is how a raft was made. He moved easily on these rafts and also carry heavy loads. So what did he do? इन्होंने ये जो rafts थी ये बहुत easily move करती थी। ये राफ्ट जो थी बहुत easily move करती थी और इस पे heavy loads को लेके जाना बहुत easy था इनके लिए। Travel on land. Now most of the man had to travel and carry load by land. So इस तरीके से बहुत सारी जगह है। अब as we know पूरे वर्ल्ड में there are a different land forms, the mountains हैं, plains हैं, rivers हैं, deserts हैं, बहुत सारी चीजें हैं। So हर जगह पे आप ये इस वाली टेक्निक्स यूज नहीं कर सकते, राइट? So अब जहाँ पे वो होती थी, स्नो होती थी, वहां पे इंसानों ने कैसे काम करना स्टार्ट किया? He joined some wooden pieces, put heavy load on it and pulled it himself. So पहले क्या करा, बहुत सारे लॉग्स को इकट्ठा किया, उन्हें जोड़ा और उसके साथ जो था लोड को खुद लेके जाते थे और खुद लेके आते थे। ठीक है, दिस वॉज अ कार्ट विदाउट अ व्हील्स कॉल्ड स्लेज। और इसी तरीके से जैसे आज माउंटेन एरियाज पे स्लेज चलता है, पहले नॉर्मल लैंड पे भी चलता था, जो प्लेन एरियाज होते थे, जैसे जहाँ पे ग्रीनरी है, जहाँ पे इजीली मूवमेंट हो जाता था वुडन लॉग्स का, तो वहां पे क्या यूज किया जाता था? A cart without wheels, which was known as sledge. It was pulled by humans then, but gradually he learned to use animals to pull it. So later he tamed animals and trained them to pull the sledge. The sledge moved easily on the smooth ground. So the sledge used to move easily on the smooth ground, as you can see in this picture that how sledge is moving on the smooth ground. But it was very difficult to pull it on the uneven or rough surface. अब जहाँ पे पत्थर होंगे, जहाँ पे थोड़ा सा रास्ता uneven होगा, rough surface होगा, so it is not easy to pull the sledge as it does not have wheels. So उसके बाद क्या हुआ, वहां पे तो मूव हो नहीं पाएगा. So what did a man do? He invented a wheel. Man saw round logs of tree trunks rolling down from a high place, so he put round logs under his sledge. The logs rolled under heavy objects. So अब उन्होंने समझ आ गया कि एक बार उन्होंने क्या देखा कि ऊपर से रोल होती हुई लकड़ी आ रही है नीचे. उन्होंने क्या करा कि अपने स्लेज के नीचे उन्हीं लकड़ियों के पीसेस को लगा दिए और ऐसे ही व्हील इन्वेंट हुआ. लेटर ऑन ही थॉट ऑफ फिटिंग द स्लेज ऑन रोलिंग लॉग्स. और उसने क्या सोचा कि जो रोलिंग लॉग्स है उनको हम स्लेज के नीचे फिट कर देंगे. He cut slices of a tree trunk. Here you can see. Here he cut the slices of a tree trunk. Holes were made in the centers of the slices. Two slices were joined by an axle. So होल्स बनाए गए व्हील्स के बीच में, उसके बीच में एक्सल डाला गया. दिस इज द एक्सल जो ये आपका सेंटर में है, जो बेसिकली एक अटैच कर रहा है दो व्हील्स को आपस में, दैट इज द एक्सल. और जो एक्सल को था उसको स्लेज में फिक्स किया गया. एंड दिस इज हाउ अ मैन मेड अ व्हील्ड कार्ट. और इस तरीके से एक व्हील्ड कार्ट जो थी वो बनाई गई. इट मूव्ड ऑन uneven ground easily. अब जो uneven surfaces थे, it moved there also. Gradually bullocks and horses were used to pull the carts. So धीरे धीरे bullocks और horses को train किया गया to move these carts. As you have seen आज के टाइम पे भी in the villages the bullock carts and the horse carts are still used, जिसे हम घोड़ा गाड़ी या फिर बैलगाड़ी हिंदी में बोलते हैं. कार्ट्स में मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड द गुड्स मच इजियर. जो कार्ट्स थे उससे अब लोगों का मूवमेंट और सामान का मूवमेंट थोड़ा इजी हो गया था. पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज एक्सचेंज गुड एंड नॉलेज. और धीरे धीरे ऐसे ही लोगों ने आपस में गुड्स और नॉलेज एक्सचेंज करना शुरू कर दिया. नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम मैन यूज द व्हील फॉर टू मेकिंग क्ले पॉट्स. अब व्हील तो इन्वेंट हुए, व्हील उसके बाद कहाँ यूज होने लगे? टू मेक द क्ले पॉट्स. एज वी नो जब पॉटरी होती है इट इज डन ऑन द व्हील ओनली. Even today, clay pots are made on the wheel. Yes, they are dried in the sun and baked to them make them strong. So wheels के ऊपर pottery की जाती है, फिर उन्हें sun में सुखा के bake किया जाता है to make them strong. जो आप घर पे घड़ा होता है मिट्टी का या फिर कोई भी clay pots होते हैं, they are all made like this only. Now the invention of the wheel was very important event in the life of a man. फिर जब उसके बाद wheel invent हुआ, that was the main very important moment of the man's life. The wheels have been improved in many ways. So the wheels, quality of wheels, designing of wheels have been improved in many ways.
प्रोग्रेस वॉज वेरी फास्ट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, और जैसे ही व्हील इन्वेंट हुआ वैसे वैसे ही प्रोग्रेस बहुत तेज स्टार्ट होना शुरू हो गया. The wheels are used in almost all kinds of vehicles and machines. So जो wheels हैं, they are used in most of the machines and vehicles also. The wheels are found now everywhere from the greatest factory to the smallest watch. So आप देखोगे तो जो wheel है basically वो बड़ी से बड़ी फैक्ट्री में और छोटी अगर वॉच की भी फैक्ट्री है, it is used there in the machines. Now invention of metals. Later on, man learned that some stones are harder than the ordinary stones. अब man ने digging start करी, he found some stones which are more harder than the normal stones. So what did he do? He melted these stones. He melted these stones in fire. Metals were obtained through melting of these stones. और उन्हें क्या मिला melt करके? They got metals. Iron and copper were probably the first metals to discovered. Man started making various things from these metals. अब ये माना जाता है the two metals, that is your iron and copper, these were the first metals which were discovered and man started making some new things from these metals. Iron is a hard metal. Iron एक hard metal है काफी. The man made sharp and strong tools of iron. So what did he do? He started making tools made of iron. He cut the forest with them and used the land for growing crops. So what did he do with these tools? He used to cut the forest and made the agriculture sites there. He started growing crops there. Iron has been the most used metal since then. और उसी टाइम से जो iron है आज के टाइम तक it is the most used metal. Now modern man. The invention of the wheel and the metals brought about a big development in the man's life. So जो दो तीन चीजें थी जिससे बहुत ज़्यादा change आया. First thing was fire, then your wheel came and then metals. So इससे जो है काफी development आया human life में. He gradually developed new means of transport and agriculture. और धीरे धीरे a man developed new means of transport and agriculture also. He found more free time to make more inventions and developments. And whenever a man had a free time, what did he do? He started making more efforts to invent more things. Now man's life has become very comfortable now. आज के टाइम पे हमारी लाइफ बहुत comfortable है. We have a lot of facilities, everything at very ease. He can get water through tap. अब आज के टाइम पे we do not have to go to very far place to get water or to fetch water. We have them at our home with the help of tap. We also have electric lamps for light. We can talk to people by telephone, and we can watch events, social events, everything, every news of any place on the world. We can watch it on the television. But today also in some parts of the world, man still lives like the early man. बहुत सारी जगहें ऐसी आज के टाइम पे भी जहाँ पे द मैन आर लिविंग द लाइफ ऑफ अ अर्ली मैन. बहुत सारे लोग हैं बेसिकली जो अभी भी जंगलों में रहते हैं और जिससे लोग पहले टाइम पे लाइफ जीते थे वो अभी भी ऐसी लाइफ जीते हैं. सो दे आर बेसिकली द ट्राइबल पीपल. नाउ क्लासरूम एक्टिविटी. नेम टू एनिमल्स यूजफुल फॉर मैन. फर्स्ट, फॉर गेटिंग मिल्क. सो वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, buffalo. Now for riding, so man used horses and bullocks. For carrying load, donkey and bullock. Now fourth, for wool. So we get wool from sheep, goat, yak. So there are a lot of animals other than the sheep from where we can get the wool. Now take the correct answer first. The most used metal. So the most used metal is iron. The first animal that became man's friend. So the animal that became the man's friend was a dog. Third, the habitation of the early man's habitation began near the rivers. Match the following. Donkey. So a donkey is the animal which is used for carrying load. Second, sledge. Sledge is basically a cart without the wheels. So sledge are a cart without a wheel. Now raft. Raft is the tied logs for floating in the water. And wheel is the round pieces of wood rolling on the ground. Now see, answer in one word. What was formed by a number of huts at one place? So a habitation was formed by a number of huts at one place. Second,
What is a cart without wheels called? So a cart without wheels is known as a sledge. SLEDGE. What is the number of logs tied together and floated in a river called? So it is known as a raft. Fourth, what was obtained by melting of harder stones? So we obtained metal. Now answer the following questions. How did early men learn farming? So how did early men learn farming? So when an early man used to eat fruits and grains, he used to throw the seeds on the ground, soft ground. So there he observed that the new plants would grow from seeds. So that is how early man learned farming. Why did dog became man's friend? So a dog becomes when man friend dog, sorry, a man found that a dog is a friendly animal when he ate the leftover food of the man. And when he started taming dog, he discovered that a dog protect the person from the wild animals. He used to bark when their wild animals are around. So this is how the dog became a man's friend. Why did man begin to tame some animals? So when early man used to live near the rivers, so he discovered that there are some animals which are useful for them. For example, dog, as dog is useful for them as it protects them and it is a friendly animal. And second, he discovered that the milk of the cow, goat and sheep is a tasty food. So that is why he started to tame animals. How did the early man make his hut? So early man started to make his hut with wood and stones, and he used to cover the roof with the leaves and the barks, and he used to put the large stones so they cannot float off from the top. So that is how the early man made his hut. Now, why did the early man prefer to live near a river? So early man lived near a river to complete the need of the irrigation and the drinking. So that is how he preferred to live near the river. So we have completed the chapter. You will get all the answers in the chapter only. These answers are on the first, second and third page. You will get all the answers. So if you have any problem, you can mark them. Thank you so much. If you have any problem, you can watch it again also. Happy learning.